So first of all, they're saying name the type of isomerism shown, name the type of stereoisomerism shown by this. Acha. So stereoisomerism के लिए आपने दो चीजें देखनी है. Either you can get optical isomer, in which case you will have chiral center. Do we have a chiral center here? So this first carbon is attached to 3 hydrogen chiral नहीं होएगा. Second carbon, hydrogen, OH, CN and CH3 ये chiral है. 4 different groups are attached इसके साथ. और third carbon has triple bond तो वो chiral नहीं है. So this is going to show optical isomerism. ठीक है. Draw the 3-dimensional diagram of this pair of stereoisomerism. अच्छा. Sir. Yes. Sorry to cut you off. No problem. जब भी chiral carbon आएगा तो वो given है कि optical isomer होगा, geometric नहीं होगा. अच्छा देखो, chiral carbon हमेशा optical isomers देगा, लेकिन हो सकता है कि कोई और कार्बन डबल बॉन्ड्स वाला हो और वो सिस ट्रांस आइसोमर दे उसी कंपाउंड में. ठीक है, बट मोस्टली हम ये पहले देखेंगे ऑप्टिकल है या नहीं. नहीं, दोनों ऑप्शन है. यहाँ पे मैंने पहले ऑप्टिकल चेक किया, मैं सिस ट्रांस भी चेक कर सकता था, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता. ऑलराइट, नाउ एवरी स्टेरियो आइसोमरिज्म हैज अ स्टैंडर्ड फॉर्म. जैसे ऑप्टिकल आइसोमर की स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, और मतलब इसको आप थोड़ा सा स्विच भी कर सकते हो. इट डजंट हैव टू बी दिस वे, इट कैन बी लाइक दिस एज वेल. मतलब दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, जस्ट लाइक जियोमेट्री की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ड्रॉ करनी होती है पहले. सो इसकी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ड्रॉ कर लेता हूँ. आई हैव दिस कार्बन हेयर 1 2 3 and 4. नाउ लेट्स सी. This carbon is attached to hydrogen on one side, OH on the other side, CN on the other side, and CH3 on the other side. In A levels, it does not matter कि आपने CN इधर लगाया, OH इधर लगाया, CH3, मतलब आप जहां मर्जी लगाओ. In A levels, it doesn't matter. Actually, it does. ठीक है, but we don't care at the moment. अब इसका आइसोमर कैसे एग्जिस्ट करेंगे? You'll draw a mirror line, and यहां पे आपने उसे स्विच कर लेना है, बिल्कुल रिफ्लेक्ट करना है उसको. तो ये इधर OH हो गया, ये इधर CN हो गया, ये इधर sorry, dotted line on J. Dotted means it's behind us. So CH3 हो गया और ये hydrogen. Notice that I've reflected it perfectly on this side. And that reflection is important. Also, don't forget to do this. उसने बोला है कि आपने स्टार लगाना है, तो हम स्टार लगाएंगे. We shouldn't forget it. But you don't have to do it on both sides. You can do it on any one and that will be fine. Now, Sir? just like, yeah. Sir, how do we know कि हमें like इसे reflect करना है? Is it like an optical thing या फिर have they mentioned it like somewhere? In any optical isomer, you will get enantiomers. Enantiomers are literally the mirror image. तो mirror image तो बनाना ही बनाना. Okay, ठीक है. Thank you. You're welcome. Give the structure. अच्छा, ये reaction अभी हमने नहीं पढ़ा, तो we will leave this out. Phenol is a naturally occurring organic molecule found in many fruits. Okay. Tell me, does this qualify for cis-trans isomerism? No, sir. Why not? So 2 CH3 groups on the same. Exactly. Carbon. This carbon on the left side has 2 common groups. तो ये नहीं कर सकता. अच्छा जी, वो ये reaction करवा रहा है इसका. I don't think that we need to. We haven't done it at the moment, so I'll leave this out. Phenol reacts with steam to form a mixture of 3 isomers J, K and L of formula this. ठीक है. अच्छा, अब मुझे इसके 3 isomers बनाने और water के साथ इसका reaction किया. अब O levels में हमने पढ़ा था that any double bond thing can react with water at high temperature and form alcohol, right? So इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब मैं इसका reaction कराऊंगा तो मेरे पास H और OH add हो जाएंगे. So the double bond will break first of all. New bonds will be made. ये CH3 है. अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप CH3 ये यहाँ पे लगा दो या यहाँ पे लगा दो. Doesn't matter. ठीक है? Because ये sigma bonds and sigma bonds can rotate. ठीक है? They don't have restricted rotation. Similarly, यहाँ पे H था, यहाँ पे CH2OH था. तो अब H और OH लगने हैं. तो one option is कि H इधर आ जाए और OH इधर आ जाए. That is one option. The other option is
कि H और OH में से H इधर आ जाए और OH इधर आ जाए. And notice that these are two isomers. Okay, so I have made them. Clear? इसके अलावा क्या So है? this is like stereoisomer, like this is functional group value. This is positional isomer because the carbon on which OH is attached is different from the other carbon. ठीक है? Yeah. Yeah. And the next one is the third isomer that we have. वो हमने अभी reaction इसका पढ़ा नहीं है. ये DNPH वाला. तो I will not go through that at the moment. सही है. So हमारे पास steam के साथ इसने react किया और हमारे पास ये चीज होगी. अच्छा जी, आगे चलते हैं. Give the structure formula of K and L. Structural formula of K and L. So first of all, structure formula क्या होता है कि आप हर कार्बन को individually deal करते हो. So maybe I can start with this carbon here. तो इस कार्बन के साथ एक CH3 ये लगा हुआ है, एक CH3 ये लगा हुआ है, तो I can put it all in bracket and I'll be like, okay, CH3 दो हैं. उसके बाद इस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, ठीक है. तो I've covered this carbon up, and now I move to this carbon. इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और फिर I move to the next carbon और वो है CH2OH. ये लें जी, I've done it. एक ये मेरे पास है. The other that I can have is this one. तो इसमें क्या करूंगा, इसमें मेरे पास CH3 दो हैं, carbon with one hydrogen लगा हुआ है. Notice I'm still focusing on this carbon here. Now I move to the next one, that is CHOH, and then CH2OH. ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया. Sir, how are they stereoisomers? They're not stereoisomers. Who said they're stereoisomers? Sir, ऊपर लिखा हुआ है K and L are stereoisomers. अच्छा हाँ, oh, stereoisomers. Sorry, I did not read that. अच्छा, these are not stereoisomers. These are position isomers. Stereoisomer का मतलब ये होगा कि आपके पास या ऑप्टिकल है या सिस ट्रांस है. सिस ट्रांस इसमें हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? So no double bonds. नो डबल बॉन्ड. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास कोई कायरल सेंटर है. लेट्स आइडेंटिफाई देम. इसमें तो कायरल सेंटर नहीं हो सकता because this carbon has CH3 and CH3 and this carbon has H and H. But यहाँ पे हम देखते हैं, and here we do have a chiral center because this carbon has H, OH, this and ये पूरा. तो 4 different groups. So I will skip this one. Thank you for pointing that out. और ये मेरा आंसर है. ठीक है, इसके मेरे पास different isomers होंगे. ठीक हो गया? Sir, I'm so sorry, but could you repeat? So basically, I drew the two isomers, or I was actually thinking कि कुछ और करेगा, but ये stereo isomers वाला part मैंने I did not pay attention to that. So यहाँ पर in this compound, this carbon is attached to common groups. तो ये तो से optical isomer नहीं हो सकता. But this carbon is attached to 1, 2, 3, 4 different groups. And because of that, this is a chiral center. And since it's a chiral center, इसका optical isomer दो होंगे. एक dextro होगा, एक levo होगा. Okay? So basically K and L would have this structural formula, but their shapes would be different if you were to draw them. Yes. इनका आप standard form में लाओगे इनको, सही. और फिर उसके बाद इनको draw करोगे. Okay? Okay, सही. Name the type of stereoisomer shown. Optical. So do you see कि ये questions repeat हो रहे हैं? This third question is that define the term structural isomer. I would suggest कि ये अभी जो reactions हो रहे हैं इन सबको आप ignore करो क्योंकि हमने अभी इनको नहीं पढ़ा है. But हम पढ़ेंगे, don't worry. 1-bromobutane is a structural isomer of the product this. Structural isomer का मतलब है कि या इसकी chain different है, या इसका position different है, या इसका function group भी different हो गया. अच्छा, define the term structural isomer and name 3 different types. अच्छा, I just named them. So what exactly is it? जो हम O levels में definition पढ़ते थे ना, this is exactly the same. That the structural isomers have the same molecular formula. That is one thing that's common in them, but they have different structure. And it's a good idea if you don't say different structure, you say different structural formula. So same molecular formula, different structural formula. ठीक है? अच्छा,
Then they're saying types of structural isomers. We know there's the chain, there's the function group, and there's the position isomers. तो ये तीन हमारे पास differences हैं. Give two reasons why methyl propene does not show stereoisomerism. Let me see. Do I have the structure of methyl propene? खैर बना लेते हैं. Methyl propene. So I have propene, which is this standard form में लेके आता हूँ इसको, and this is methyl. And now it is so clear to us कि ये क्यों नहीं करता. Because one carbon is attached to what? Two same atoms. Groups. Yes. So there is two identical groups on one carbon. एक तो ये बात होगी, लेकिन उसने बोला give two reasons. And the two reasons are क्योंकि ये स्टेरियोआइसोमरिज्म की बात कर रहा है, ये ज्योमेट्रिक की बात नहीं की है उसने. That means हमने ऑप्टिकल की भी बात करनी है. So we'll say कि no chiral center. So basically the first point is of a geometric isomer and the second one is of optical. Yes. Okay. अच्छा, अब नो कायरल सेंटर से हम ये तो बता सकते हैं कि हाँ कायरल सेंटर नहीं है तो इसके इनैंशुमर्स एग्जिस्ट नहीं करते होंगे जो कि डिफरेंट हों, लेकिन इनैंशुमर्स एग्जिस्ट तो करते हैं. इनैंशुमर क्या होता है? मिरर इमेज. यू कैन टेक एनी मॉलिक्यूल एंड मेक अ मिरर इमेज ऑफ दैट. तो आइसोमरिज्म तब आता है जबकि इनैंशुमर्स आर नॉट आइडेंटिकली, द वर्ड इज सुपर इम्पोजेबल. जैसे आपके दो हाथ हैं, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, दे आर नॉट आइडेंटिकली सुपर इम्पोजेबल क्योंकि ओपोजेबल थम्स हैं आपके पास. Just like that, these isomers, they are non-superimposable images. So, हम ये भी कह सकते हैं that the mirror images are superimposable. And yeah, that is how you talk about the isomerism and everything. Any questions on this? No, sir. All clear? Yes, sir. बहुत जरूरी है कि आपको ये चीजें perfectly clear हो. Okay.